Hello dear all, this is Sadanand Malik, welcomes you in entire physics. Today we will study about the interference of light. But before studying about interference of light, we should know very well what is the principle of superposition. So here, under this interference of light, we are going to study about principle of superposition. Now, friend, let's go to study about the superposition. What is the meaning of superposition here? Actually, when many number of waves are moving in a media, suppose these are the many number of waves, they are moving in a media. By this way, they are going to move in a media. Obviously, at a particular point, they will overlap. Wave 1, wave 2, wave 3 up to wave n will overlap one another. Then obviously in their resultant wave, the equation will be varied from the initial interfering or initial overlapping wave. Suppose the wave equations are given as y1, y2 up to yn. Then in the resultant wave, the wave equation y will be differ from the initial one. Now this difference may be either in form of intensity or phase difference. So now if we want to study about the principle of superposition, means how the wave equation of resultant wave we can find. For this, according to principle of superposition, when many number of waves overlapping to one another, then in their resultant wave, the wave equation will be the algebraic sum of the interfering or overlapping wave, means y1 plus y2 plus y3 up to dash dash yn will give the resultant wave equation y. Now what is the meaning of algebraic sum here? Actually, algebraic sum means either if all the waves are moving in the same direction, then their equation will be added. But if they are moving in the opposite direction, then their equation will be subtracted. Suppose wave y1 is moving along positive x direction and wave y2 is moving along negative x direction. Then in their overlapping, the resultant wave equation will be given as y1 plus minus y2. Means here we can write y1 minus y2. So this is the principle of superposition, means when many number of waves overlap to one another in a media, then their resultant wave equation is the algebraic sum of the displacement equation of the overlapping wave. So this is the principle of superposition. So here in our topic interference of light, we will use the formula y resultant wave equation y is equals to the algebraic sum of the individual wave equations of interfering or overlapping waves, y1 y2 plus y3 plus dash dash up to yn. So this is the general formula of principle of superposition, equation 1. Now let us study about the fundamental conditions or necessary conditions to occur the interference, means which conditions should be fulfilled to study about the interference. Necessary conditions of interference. सो हियर डियर ऑल, हम यहाँ पर वो नेसेसरी कंडीशंस निकालने जा रहे हैं जो इंटरफेरेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. तो यहाँ पर हम देखिए इंटरफेरेंस में बहुत सारे लाइट वेव्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन लाइट वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टी ही क्या कहलाता है, नेसेसरी कंडीशंस यहाँ पर.
all those properties which are very much important or necessary for occurring the interference, those are known as necessary conditions of interference. So here we will study one by one. So number first, monochromaticity. Monochromaticity, what is the meaning of monochromaticity here? Actually monochromaticity means single wavelength. Single wavelength means all the interfering waves which are going to participate in interference should have the same wavelength. Suppose the wavelength of one wave is lambda, then all the waves should have the wavelength lambda here. If lambda is same means wavelength is same, then obviously their frequency is same. So here monochromaticity we can define either their wavelengths are equal to one another, or in other words we can say that their frequency should be equal. तो इस तरह से मोनोक्रोमैटिक वेव हम किनको कहेंगे? जिनकी वेवलेंथ बराबर होती है या जिनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होती है, क्योंकि वेवलेंथ बराबर होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। तो ये पहली कंडीशन हुई हमारी। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। दूसरी कंडीशन पर आते हैं हम, तो ये होता है कोहेरेंसी। कोहेरेंसी एक्चुअली इन हिंदी वी कैन से कोहेरेंसी एज कला संबद्धता। कोहेरेंसी को हम कला संबद्धता हिंदी में कह सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोहेरेंसी हियर? लुक हियर बेटा, इफ़ द इंटरफेयरिंग वेव्स, ओके, द वेव्स विच आर गोइंग टू इंटरफेयर हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, देन दोज वेव्स आर नोन एज कोहेरेंट वेव। जैसे अगर हम दो वेव की बात करें, इस कोहेरेंसी को समझने के लिए हम दो वेव लेते हैं। सपोज ये पहली वेव है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम इसका वेव फॉर्म बनाते हैं। तो सपोज ये वेव फॉर्म है। इसी प्रकार हम दूसरा वेव ड्रॉ करते हैं। सपोज ये y1 है और ये y2 है, सेम डायरेक्शन में सपोज मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये y2 लेते हैं। तो इसका हम इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। सो इस तरह से हमारे पास दो वेव्स है इस तरह से। तो अगर हम इन दोनों वेव को स्टडी करें बेटा, तो इनिशियली हम है ना, वी फाइंड दैट इनिशियली द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज pi/2. According to this figure, initially phase difference is pi/2. At any point, if we consider arbitrary any point, then obviously the phase difference is pi/2 there. Just as if we consider this point, then here again the phase difference is pi/2. Here again the phase difference is pi/2 because its crest is at this point and its crest is at this point, and इन दोनों का क्रेस्ट यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो pi/2 है। तो इस तरह के जो वेव्स है ना, द वेव्स इन विच द फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम एंड स्पेस, मतलब समय और डिस्प्लेसमेंट के साथ उनका फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहते हैं, तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट वेव। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपन कोहेरेंसी कहते हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए ये कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी फुलफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे की बात करें हम, थर्ड पॉइंट में आते हैं, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सेम डायरेक्शन ऑफ propagation. Actually the meaning of propagation means to move. Okay, the waves which are moving in a media should have the same direction if they want to interfere to one another. So here suppose these are the interfering waves, so they should move in the same direction. What will happen if they are moving in the different direction? Look here beta, suppose if they are moving in different direction, then after some time they will not interfere to one another continuously. So here for to study about the interference, it is compulsory to move in the same direction. So this is the third property. Now let us study about the fourth one. Fourth property, nearly same amplitudes.
of interfering waves. Nearly same amplitude of the interfering waves means the waves which are going to interfere to one another should have nearly equal amplitude, means their amplitude should not be very differ from one another, because if their amplitudes will be differ from one another, means suppose one waves has the very high amplitude and other wave has very low amplitude, then what will happen? Suppose this is the first wave and its form is like this. Obviously this is known as amplitude, and its amplitude is very much high as compared to this wave. If we are going to consider other wave, suppose this is the second one and this wave is like this, and obviously its amplitude is small enough. So when these two waves, suppose y1 and y2, will interfere to one another, then the contribution of y2 in the resultant one is impossible to study, because its amplitude is very much small, and obviously if amplitude is small enough, then intensity I is directly proportional to square of the amplitude, then its intensity will be small enough. So here, to study about the interference or to study about the contribution of each of the interfering wave in the resultant one, it is compulsory to have the nearly equal amplitudes. So this is the fourth one property. And now let's go to the last and fifth property. Same plane of polarization. Same plane of polarization. Here, if suppose, dear all, if the interfering waves are plane polarized, so their plane of polarization will be same. All the waves should have the same plane of polarization. जितने भी वेव इंटरफेयर कर रहे हैं उनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए. अब हम अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की बात यहाँ पर करें तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक वेव है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. As we know, an electromagnetic wave has electric vibration along a particular direction. Obviously it is a transfer wave, that's why the electric vibration will be perpendicular to the direction of propagation. So suppose along y direction, this is the vibration of electric field. Suppose ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कंसिडर करते हैं ट्रांसवर्स वेव होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और हमने सपोज किया कि ये जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन में है. एंड नाउ लेट्स ड्रॉ अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. मीन्स हम एक ऐसा प्लेन कंसिडर करने जा रहे हैं यहाँ पर जो प्लेन इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ साथ ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर हम एक उस प्लेन को अगर ड्रॉ करें तो वो जेड डायरेक्शन में होना चाहिए. तो प्लेन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह का हमें एक प्लेन मिलेगा. जो प्लेन किस डायरेक्शन में होगी? जेड डायरेक्शन में. इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जेड डायरेक्शन. तो ये जो प्लेन जेड डायरेक्शन में हमें मिली है, दिस प्लेन इज नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ये क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. तो अगर जो लाइट वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं वो प्लेन पोलराइज्ड है, तो उन सब के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक ही दिशा में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं. सो दीज वाज द नेसेसरी कंडीशंस टू ऑकर द इंटरफेरेंस. एक्चुअली इंटरफेरेंस विल ऑकर इन ईच एंड एवरी कंडीशन, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंस, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, then these conditions are compulsory, only then we can study about it. So student, dear all, now in this lecture we have studied about the necessary conditions of interference of light as well as the superposition, principle of superposition here. And now further we will study about the definition of interference as well as the type of interference. Now the definition of interference of light we are going to study.
So the definition of interference of light. और इसका वर्टिकल फोर्स कैसा होगा F sin थीटा, है ना। तो इस केस में दोनों के दोनों फोर्सेस यानी वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों ही कैसे रहेंगे, ये वाले साइन कन्वेंशन Definition of पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या कोई ये पॉजिटिव मिलेगा या कोई interference of light. दोनों पॉजिटिव होंगे ना डेफिनेटली। आप लोगों को थ्योरम भी पता है। हाँ, Actually here verbally we can define interference of light as when two or more waves are moving in the same direction, having the same frequency with slightly different amplitudes, overlaps to one another. Then in their resultant wave the intensity is redistributed. The intensity is differ from the initial interfering waves. At some points of the resultant wave, the intensity becomes maximum, and at some other points, the intensity will become minimum. This phenomena of light is known as interference. Now, as we have defined that in the resultant wave, some points corresponds to maximum intensity. So, the points corresponds to देखो अगर किसी maximum intensity shows one type of interference. इसका अगर हम रिजोल्यूशन करते हैं तो समझिए जाना, इसका रिजोल्यूशन One type of interference known as का वर्टिकल फोर्स कैसा मिलेगा हमको, ऊपर की तरफ constructive interference. डायरेक्शन बनाना है। इसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो ना कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में कैसे मिल गया सर या वर्टिकल Constructive interference. So this is the type 1. इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी। हम इफेक्ट ऑब्जर्व करते And now हैं, इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को the other type is corresponding to the points मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, उसी के तरफ जाएगा ना, पीछे की तरफ नहीं चला जाएगा। ठीक है, इसको कुछ बच्चों को होता है इसको, having minimum intensity. ये बिल्कुल सिंपल ही है। Having जैसे minimum ये पेन है, इस पेन को अगर मैं इस intensity ये पेन का मोशन अगर होगा in the resultant wave तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बताते हैं यहाँ पर, तो वो अलोंग द कोर्स ही बताते हैं, मतलब जिस तरफ कोर्स जा रहा होगा उसी की तरफ होगा। will show और अगर ये इसका वर्टिकल destructive interference. अगर इसका फोर्स लगा है तो इसका वर्टिकल इफेक्ट नीचे की तरफ तो मिल जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, है ना। अगर इसका वर्टिकल देखोगे, इसका वर्टिकल इफेक्ट तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही दिखेगा। अगर ये अपवर्ड मोशन Destructive ऊपर मतलब वर्टिकल मोशन अगर आता है इसमें तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। interference. So here we have two types of interference, constructive interference and destructive interference. Now here we have to find the condition of constructive and destructive interference. So if we want to study about them, then let us consider minimum two waves. Okay, so let us consider स्लाइड दिख रही है ना सभी को, स्लाइड विजिबल है, मैं तो two waves of same frequency. Same तो अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, frequency, suppose nu, हॉरिजॉन्टल के having slightly different amplitudes, देखिए वर्टिकल कहाँ पर जा रहा slightly different amplitudes, suppose A1 and A2 are moving है वर्टिकल in the वर्टिकल ऊपर की same media हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में जाते हुए दिख रहा है, इस वजह से ये in नेगेटिव हो गया। same direction. अब याद रखना, यहाँ पर हमने जब देखा, यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल Then कैसे मिले, पॉजिटिव मिले, लेकिन if जब हम सेकंड पार्ट at any instant of time लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा मिला, ठीक है। अच्छा, हमारे t, फॉर्मूले के suppose कंसीडरेशन के हिसाब से जो वर्टिकल फोर्स है the phase difference वो मान लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हम F1 मान लेते हैं। between them फिलहाल
तीसरे केस की बात कर लेते हैं। तीसरे केस में फोर्स का एंगल कहाँ पर जाएगा? between them is कितना होगा? phi. लेकिन इनके बीच में Then their wave equations will be तो यहाँ कहीं पर आपने as थीटा पर फोर्स कंसीडर किया है और for first wave the wave equation will be रिजॉल्व करोगे y1 is equals to a1 is the amplitude sine omega t. For the second wave y2 is equals to a2 is the amplitude of second one sine omega t, because there is a phase difference of phi, so obviously one wave will lead ahead by a phase difference phi to the other one. So suppose our second wave, ये जो second wave equation है, suppose ये phi phase difference से आगे है, so here in omega t we have to add phi, so its equation will become like this. Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Here y1 and y2 will give the transverse displacement of first wave and second wave. A1 and A2 are the amplitudes of first and second. Omega, actually omega is known as angular frequency. Omega is angular frequency and its value is 2 pi times the linear frequency, 2 pi nu, 2 pi here 360, and t is the instant of time. So now because these two waves are allowed to interfere to one another, because ये दोनों वेव जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर होंगे, तो अगर हमें उनके रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकालना है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी. So using the principle of superposition, using the principle of superposition, the resultant wave equation हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ था तो इस will be y, suppose resultant wave का इक्वेशन है y should be equal to y1 plus y2. Now let's substitute the value of y1 and y2 from equation 1 and 2. So here we have y equals to y1 is equal to a sin omega t, a1 sin omega t, a1 sin omega t, plus y2 equals to a2 sin omega t plus phi, a2 sin omega t plus phi. Now look here beta, in the second term we have sin a plus b type, so here by using a trigonometrical formula we know that since sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, applying this formula in the second term of above equation we have y equals to first term will be as it is a1 sin omega t plus in second term a2 under कोष्टक we can write sin a means sin omega t into cos b means cos phi plus cos a means cos omega t into sin b means sin phi. So now let's try to simplify it. So a1 sin omega t plus multiplying this a2 inside the bracket, then we have a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. Now here in the first and second term sin omega t is common, so let's take common sin omega t from the first and second term, then we have the remaining term a1 in the first one
and a2 cos phi in the second one, because sin omega t is taken common here, plus the third term will be as it is, a2 sin phi cos omega t. Now, for sake of our convenience, let us suppose to give a compact form to this equation. Let a1 plus a2 cos phi is equal to a cos theta, suppose. Similarly, a2 sin phi is equals to, suppose, a sin theta. When we need the value of a cos theta and a sin theta, we will use this set of equation. Suppose this is the equation number 3. Now, let's substitute the value of a cos theta and a sin theta in the above equation. Then we have y equals to capital A cos theta sin omega t plus capital A sin theta cos omega t, because A is common in both the terms, so take it common. Then we have sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi is equal to, now again applying the trigonometrical formula, sin A cos B plus cos A sin B, then we have sin A plus B means sin omega t plus, I'm sorry, actually here it is not phi, it is theta, sin omega t plus theta. So this is the resultant wave equation, equation number 4th. This is the resultant wave equation. Having the amplitude capital A. Now, if we want to calculate the resultant amplitude capital A, for this let us solve the set of equation 3. Here in equation 3, if we square first and second on both sides and then adding, then we have a square cos square theta plus a square sin square theta in the right hand side, and here first term square and its square will be added. So we are going to do this means solving set of equation 3. We have a square cos square theta plus a square sin square theta is equal to, will be the square of first term means, first term is a1 plus a2 cos phi whole square, a1 plus a2 cos phi and its whole square, plus second term is a2 sin phi whole square. Now solving, a square is taken common, under costak we have cos square theta plus sin square theta is equal to, here applying the formula a plus b whole square, here a plus b whole square, we have a1 square plus a2 square cos square phi plus 2a1 a2 cos phi, and the third term will become a2 square sin square phi. Now again simplifying a square, because cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So here no need to write this, a square
will be equal to a1 square as it is now in the second term, and in the fourth term a2 square is common, so take it common, a2 square under cosec we have again cos square phi plus sin square phi, and the third term will be as it is, that is 2a1 a2 cos phi. Here a square is equals to a1 square plus a2 square, because here cos square phi plus sin square phi is again equals to 1 now, plus 2a1 a2 cos phi. So by this way it will give the square of amplitude of the resultant wave. We know that beta the resultant intensity चौथा क्वाड्रेंट यानी कि 270 से 360 डिग्री the resultant intensity I is directly proportional to a square or I is equal to k times a square. If we put constant k equals to 1, therefore I may be written as exactly equal to a square. So we can say that a square means I. So it will give equation number 5, give the resultant intensity of the resultant wave. Now, because we are going to study the condition of constructive and destructive interference, then obviously for constructive and destructive interference we should consider the intensity. Now let us consider case first. अगर वर्टिकल पॉजिटिव अगर वर्टिकल पॉजिटिव है Constructive interference. सेकंड में जा रहा है Constructive वर्टिकल नेगेटिव मिल रहा है तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा interference. Actually constructive interference means maximum intensity. Constructive interference means Imax. If we study about equation 5, then because a1 square is constant, a2 square is constant, a1 a2 constant, only here cos phi is variable. So if the cos phi will have maximum value, then intensity will be maximum, and if cos phi will have minimum value, then intensity will be minimum. So actually cos phi fluctuates between -1 to +1 via 0. So here the maximum value of cos phi is +1 and the minimum value is -1. So if we consider cos phi equals to +1, then intensity will be maximum, and if we consider cos phi equals to -1, then intensity will be minimum. So let's going to take it. If cos phi equals to +1, then intensity will be maximum. And what will be intensity? I max is equals to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, and it will may be written as a1 plus a2 whole square. So this is the maximum intensity. Now cos phi will be +1 if phi is equals to either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi or 2n pi. Means here we can say if phi is the even multiple of pi, then the intensity will be maximum. So here phi is the phase difference. This is phase difference. This is phase difference. Now if we want to convert this phase difference into the path difference, then we should use the relation between path difference and phase difference. So therefore path difference, that is shown by delta, is equal to, this is the formula actually beta, you should remember this. Delta is equals to lambda upon 2 pi, where lambda is the wavelength and 2 pi is the angular displacement of the wave, angular displacement of one wave. So lambda upon 2 pi into phase difference. Now applying this formula, we have path difference is equals to lambda upon 2 pi, and phase difference we have 2n pi. If we solve this, then
2 pi and 2 pi will be cancelled out. We have path difference is equals to n lambda, where n is equals to 0, 1, 2, 3 by this way. So here we can say that if the path difference between the two waves are the integer multiple of wavelength, then due to their interference the intensity will be maximum and it will show the constructive interference. So equation 6 gives the condition of constructive interference. This is the condition of constructive interference. Now let us consider the second case, destructive interference. For destructive interference. Destructive interference means beta when the resultant intensity is minimum, I minimum. Actually I will be minimum when in equation 5 cos phi is minimum. Cos phi is minimum means cos phi is minus 1. If we substitute cos phi is equals to minus 1, then obviously we have a2 square is equals to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. Now let's going to write this. I minimum is equals to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. When it is possible, when cos phi is equals to minus 1. Cos phi will be equals to minus 1 if phi equals to either pi, 3 pi, 5 pi, etc. Means here we can say that if the phase difference is the odd multiple, odd means either 2n plus 1 or 2n minus 1 into pi, then the intensity will be minimum and it will show the destructive interference, and its value, the value of intensity will be a1 minus a2 whole square. Now this is the phase difference, so the path difference will be delta is equals to lambda upon 2 pi into phase difference. So here lambda upon 2 pi into phase difference we have 2n plus 1 pi. Now this pi and this pi will be cancelled out, and here path difference will be equals to 2n plus 1 into lambda by 2. So here n is equals to 0, 1, 2, 3 means integer. So here we can say that if the path difference between two interfering waves are odd multiple of lambda by 2, then the intensity will be minimum and it will show the destructive interference. So we can say that here equation 7 shows the condition of destructive interference. So equation 6 and 7 will give the condition of constructive interference and destructive interference. So by this way, dear all, your this topic of interference has been completed. In this topic we have seen first the definition of interference, thereafter the type of interference means यहाँ दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि रिजल्टेंट वेव जो है उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम जहाँ होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होता है और इंटेंसिटी मिनिमम जहाँ होती है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो अगर हम चाहें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करें तो इसके लिए ये ज़रूरी
ज़रूरी है कि हम कम से कम 2 वेव कंसिडर करें और उन दोनों वेवों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमने 2 वेव कंसिडर किए थे, y1 और y2, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाए थे। तो इस तरह से हमें y1 प्लस y2, उसमें फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा करके हमने एक इक्वेशन निकाला, जिसके थ्रू हमारे पास रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 4, जिसमें जो आपका ए है वो एम्पलीट्यूड था। अगर हम इस एम्पलीट्यूड को सॉल्व करना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं, तो हमें सेट ऑफ इक्वेशन 3 यूज़ करनी पड़ेगी। इक्वेशन 3 का सेट अगर हम सॉल्व करते हैं, उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं दोनों साइड को, तो इस तरह से हमें एक फॉर्म मिल जाता है जिसमें हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर कांस्टेंट को हम 1 माने तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंटेंसिटी आई इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए इक्वेशन 5 में आपका जो cos फाई है वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो +1 है। तो इस तरह से हम +1 रख करके सॉल्व करते जाते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फार्मूला निकाल लिए। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सो थैंक यू। अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स कितना आया, देखो जरा वर्टिकल फोर्स कितना मिला हमको।